गाइस आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair, and function of the body. Animal nutrients includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. तो गाइस यहाँ पे आपको ये भरना है। यू हैव स्टडीज इन क्लास 6 डेट फूड कंसिस्ट्स ऑफ मैनी कंपोनेंट। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी utilization as such, so they are broken down into simple substance that break down of complex component of food into simple substance is called digestion। ये पूरा digestion का पैराग्राफ तक है। अब 2.1 different way to taking food। The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infants of humans and many other animals feed on mother's milk. Animals they prey upon some aquatic animals filter think food particles floating nearby and feed upon them. Activity 2.1 What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. Take 2.1 Various modes of feeding। तो गाइस यहाँ पे नेम लिखे हुए एनिमल्स के और इसमें किंग बताने हैं और इसमें मोड बताने। अब हमारे स्नेल है, आंट है, एगल है, ह्यूमन बर्ड है, लिक है, मॉस्क्यूटिक है, बटरफ्लाई, हाउसफ्लाई है। इसका आंसर हमारे चैनल पे मिल जाएंगे गाइस, देख लीजिएगा। स्क्रैपिंग, चीविंग, सिपोनिंग, कैप्चरिंग एंड swallowing, sponging और sucking etc. Amazing fact: starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animals inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested। फिगर 2.1 स्टारफिश। अब हम पढ़ेंगे 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमन। मतलब इंसान कैसे डाइजेस्ट करता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइजेशन इट। द unused parts of the food are defected. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? The food passes through a continuous canal। फिगर 2.2 आपने देखा था, अभी दिखाएंगे 2.2 में आगे। which begins at the buccal cavity and ends at the ends. The canal can be divided into various compartments
पहला हमारा बॉडी का पार्ट है द बक्कल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप और ओसेफिगस, तीसरा है स्टोमच, चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग in the rectum, and sixth हमारा the anus. It is not a very long path. This part together from the alimentary canal, digestive tract. The food components gradually gets digested as food travels through the various compartment. The anal walls गाइस ये थोड़ी सी बड़ी होगी बस वीडियो ऑफ द स्टोमच एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पेंक्रियास secretes digestive juice. The digestive juice can कॉन्वर्ट कॉम्प्लेक्स. हमारा पहला बॉडी का पार्ट है बक्कल कैविटी, दूसरा है सेलिवेंट्री ग्लैंड्स और जिससे हमारा खाना जाता है स्टोमच में, उसका नाम है ओसोफिगस. फिर ओसोफिगस से जाता है स्टोमच में, स्टोमच के बाद पहले लीवर में जाता है, फिर गॉल ब्लैडर में, फिर स्टोमच में, फिर पेंक्रियास, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, एनस. फिगर 2.2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. आपने देख लिया डाइजेस्टिव सिस्टम. Substance of food into simple ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. The mouth and buccal cavity के बारे में पढ़ेंगे. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food in. मिल्क टीथ एंड परमोलर टीथ पढ़ते हैं पहले, फिर आगे का पढ़ेंगे. डू यू रिमेंबर अबाउट filling of your teeth? Some years ago, the first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. This year कहाँ चला गया गाइस, एक सेकेंड. These are thermate milk teeth. The second set that replace them are the during old age or due to some dental disease. Buju is fascinated by the highly correlated small intestine seen in figure 2.2. He wants to know its length. Would you like to make a wild guess? We have given its approximate length on page 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. अब ये पढ़ेंगे. The body is called injection. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a spirit soaked in the gums. Figure 2.3. Our teeth vary in function accordingly. They are given different names. Figure 2.2 देखते हैं अब. ये 2.2 पहले हमारा मोलर, फिर आता है परमोलर, फिर आता है कैनिन, फिर आता है इंसेसर. इसका मतलब है गाइस जब हम जबान के ये वाले दांत पे रखते तो अलग टेस्ट आता है, ये वाले पे अलग टेस्ट आता है, इस पे अलग, इस पे अलग. A range of teeth and different type of teeth. Which ones for pecking and tearing? Also find out the ones that are used for chewing and grinding. Record your observation in table 2.2. अब इसे ऑब्जर्व करना है ना, हमारे चैनल पे इसके आंसर भी हैं.
Wash your hands, look into the mirror and count your teeth. Use your index finger to feel the teeth. How many kinds of teeth could you find? Take a piece of an apple or bread and it. Which teeth do you use for biting and cutting? And our mouth has the salivary glands which secretes saliva. Do you know the action of salivary on food? Let us find out. और ये salivary देखिए इसे कहते हैं, देखो इसे कहते हैं, देखो देख लिया। अब आगे चलते हैं। Of boiled rice in test tube, we keep one teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. Add 3-4 ml of water in both the test tubes. Figure 2.4. Now pour 2-3 drops of iodine solution in each test tube and observe why is there a change in color in the test tubes. Discuss the results with your classmates and your teacher. The salivary breaks down the starch into sugars. The tongue is a fleshy mucal organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all directions. Do you know the function of the tongue? We use our tongue for taking. Besides, it mixes salivary with the food during chewing and helps in swallowing food. We also taste food with our tongue. Has taste buds has detect different taste of food. We can find out। गाइस अगर से वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें आगे बढ़ने से पहले। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 5 अब यहाँ से बढ़ते हैं गाइस 2.4 से। Prepare a separate sample each of sugar solution, common salt solution, third lemon juice and juice of crushed neem leaf or butter gourd। दूसरा blindfold one of our classmates and ask him to take out the tongue and keep in straight and flat position। तीसरा use a clean toothpick to put the above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6. Use a new toothpick for each sample। 4. Ask the classmate which areas of the tongue could detect the sweet, salty, sour and butter substance। पहले 2.6 दिखा दूँ मैं तुम्हें, ये देखिए 2.6। अब आगे चलते हैं, ये हमारा 2.7। And the chest food in pushed down by moved of the well of the food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and push the food downwards। Figure 2.7. At times, the food is not expelled by our stomach and is vomited out। Recall the तो तो गाइस बीच में हमारी अम्मी आ गई थी यार, वो माफ करना। हम कहाँ पढ़ते यहाँ से पढ़ते हैं। द स्टोमच यार मैं भूल गया
कहाँ पड़ता है? अगर आपको पता तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। द स्टोमच इज a thick walled bag. Its shape is like a flattened G and it sits the widest part of the alimentary canal. गाइस अभी मैं पहले देख लूँ कितना बचा है। गाइस अभी तो ये बहुत सारा है। आज के लिए इतना ही और बाद में मिलेंगे। बाय।